Assalamualaikum. Welcome to lecture 2. A quick note. I just realized कि मुझे turned in homeworks return भी करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि there must be a deadline. So for lecture 1 and 2, the deadline to submit your homework is 3rd July 2020. So इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ. द गोल इज़ के लेक्चर के एंड तक आप जवाब दे सकेंगे कि बायोलॉजिकल सेल्स कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. उसी के साथ कुछ आयन चैनल्स मौजूद हैं और इन चैनल्स के थ्रू आयंस कैन फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सेल बॉडी. सो लेट्स होप के by the end of the lecture आप लोग इसका जवाब दे सकें कि how these ions can move through the cells. So before we begin, कुछ चीज़ें याद दिलानी ज़रूरी हैं. Number 1, work done की mathematical form. It is equal to integral of force applied in a direction of motion from point A to B. Number 2, conservative forces, that is the forces for which work done is independent of path. इनके लिए वर्क डन बराबर होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज के. ये सब आप लोग इससे पहले मैकेनिक्स में देख चुके होंगे. नंबर 3, वर्क एनर्जी थ्योरम. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय फोर्स. हमारे पास दो तरीके हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए. वन इज़ बाय कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इसेंशियली एक शॉर्टकट है, और सेकंड बाय इमेजिनिंग a charge inside electric field. Let's go with the second. Now imagine कि two parallel plates हैं with opposite charges, जिसका मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. Now imagine एक charge at point A on the left diagram. Conventionally, it is a positive test charge, so we can imagine a force of magnitude Q naught times E जो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगी. इट इज़ ऑब्वियस टू सी कि ये चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा. जस्ट थोड़ा गौर से देखो इस बात को. पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस सिर्फ तब होती है कि जब पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है. नीचे की तरफ मूव करेगा और जितने भी साइड वेज मोशन होंगे ये एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे. तो अगर पहले ये किसी डिस्टेंस y पे है और ये रिड्यूस होकर डिस्टेंस कोई सेकंड वैल्यू y प्राइम पे आ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. मगर अगर किसी पॉइंट A पे है मौजूद और ये दूर होकर ये लेट्स से किसी अलग पॉइंट D पे आ जाता है तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम पोटेंशियल में मौजूद है. So for any motion that is sideways, definitely work done 0 होगा. We can consider another picture, this on the right one. So imagine के दो particles हैं with same nature of charge और इनके दरमियान कोई distance है जो due to the repulsion increase हो जाता है और अब कोई ज़्यादा distance मौजूद है. Now in this case potential energy change हो जाएगी और जो resulting force होगी for the first distance is different than the force in the second new distance, right? तो जिसका मतलब ये है कि force change हो गए due to repulsion और जिसकी वजह से particles जो है दूर move कर रहे थे, right? So क्योंकि मोशन और फोर्स की डायरेक्शन सिमिलर है तो वी कैन डेफिनेटली से कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव एंड आल्सो द मैक्सिमम. मगर इस थर्ड डायग्राम में फाइनल और इनिशियल पॉइंट सिंपल रेडियल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो से कि पार्टिकल जो है मूव करता है पहले इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में. तो वी कैन से कि जब पार्टिकल अपना एंगल चेंज करता है तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल एंड द सोर्स पार्टिकल, जिसको हम सोर्स पार्टिकल मान रहे हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता. इट्स द सेम डिस्टेंस. लेट्स कॉल द डिस्टेंस r, राइट. तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ जिसका मतलब ये कि फ्रॉम पार्टिकल जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करता है तो
कोई डिस्टेंस में कवर डिफरेंस नहीं आता, जिसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ने कोई काम नहीं किया, राइट। और तो लेट्स इमेजिन सेकंड स्टेप कि जब ये हम रेडियल डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है, तो इस केस में डेफिनेटली डिस्टेंस में चेंज आ गया है, जिसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पॉजिटिव और इज़ मैक्सिमम बिकॉज जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये तो हो गया एक बात, जिसके एक सेगमेंट हमें नज़र आ रहा है जो एंगल वाला पोर्शन है, यानी कि टेंजेंशियल मोशन। इसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ओके, तो यानी कि फोर्स ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। ओके, इमेजिन अनदर पाथ जो थोड़ा सा आर्बिट्ररी है और कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पाथ को ब्रेक कर लेते हैं रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर, जो पहले से यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, राइट। तो फॉर इस पाथ के अंदर जो इसको हमने टेंजेंशियल और रेडियल के अंदर ब्रेक कर दिया है, इसमें से जितना भी टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर हुआ है इट इज़ यूजलेस बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई यूज़फुल वर्क नहीं किया। अलबत्ता जितना भी रेडियल डिस्टेंस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कोई भी हो, किसी भी तरह का हो सकता है, मगर अगर हम इसको पाथ के तौर पे देखें तो सिर्फ कुछ ही सेगमेंट होता है उसका जो पॉजिटिव और यूज़फुल वर्क कर सकता है। एंड हेंस वी कैन से कि जो पार्टिकल की मोशन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बिकॉज the only direction that is useful for the paths is the radial or the straight line in which the force is being applied. So imagine कि पॉजिटिव डिस्चार्ज फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, then the field does positive work and potential energy decrease हो जाती है, क्योंकि फोर्स हमेशा पोटेंशियल रिड्यूस करने के लिए काम करती है, और फॉर मूविंग अगेंस्ट द फोर्स विल इंक्रीज द पोटेंशियल, और साथ ही जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो नेगेटिव होगा। एंड ऑफ कोर्स द कंडीशन फ्लिप्स फॉर द नेगेटिव चार्ज। ये वही सेटअप है मगर पार्टिकल इस मरतबा नेगेटिव चार्ज है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ के आपको थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव थी, मगर इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो हियर इज़ अ जनरल रूल, यू इंक्रीज होती है जब भी टेस्ट चार्ज मूव करता है in the direction opposite to the electric force, that is F equals Q not E, और similarly U decrease होगी कि अगर Q naught जो टेस्ट चार्ज है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा with respect to the electrical force. Now let's do some maths. Consider a point charge with symmetric electric field, that is test charge anywhere will move in radial direction, और इस फील्ड में दो पाथ्स कंसिडर करते हैं, वन इज a straight path and second in the right diagram an arbitrary path. For the straight path, work done will be given by an integral like this. So this has the limits from RA to RB and this is the force dot dr. But remember कि dr जो है वो straight line है और वो radial direction में, जिसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी रेडियल होगी, एंड दिस इज जस्ट अ मल्टीपल। ओके, सो फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे सो वी गेट 1/RA माइनस 1/RB पुटिंग द लिमिट्स। ओके, एंड फॉर द आर्बिट्ररी पाथ जो ए से बी तक राइट डायग्राम में नज़र आ रहा है, the integral will look something like this. So we have f dot dl, dl being the area element of the path taken, and we need a force, but force और dl के दरमियान एक angle है and that is phi. So this is the force in this direction, right? और इनके दोनों के दरमियान angle phi मौजूद है. So we write f cosine phi dl.
अगेन एफ जो है उसकी सेम वैल्यू होगी, दैट इज़ 1/4 क्यू टाइम्स क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, मगर और इसके साथ सॉरी कांस्टेंट जो टर्म आएगी वो हो जाएगी कोसाइन फाई टी एल। ओके, तो now notice the component of cosine phi dl is just the dr component in the direction of electric field. Just look at this diagram. So this is dr ये है और dl ये है, जिसका मतलब ये है कि d cosine phi dl जो है वो is simply just a component dr. So this is again the same integral as for the straight line. It becomes the same one, और इसको सॉल्व करने के बाद भी सेम आंसर आएगा. This is what we meant by being independent of paths, right? So electric potential energy can then be written as U, that is equal to, you remember कि हम लोग वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं that U is just 1/4πε0 Q times Q naught over R. हम नोटिस के डिनोमिनेटर में R है, not R squared. This means you have to be careful plotting the potential energy curves, और वैसे भी नेचर ऑफ चार्जेस की वजह से इनकी दो किस्में हैं, for light charges and for the opposite charges. For similar charges potential energy ज़ीरो होगी, और greater distances क्योंकि दूरी में है इनके लिए खुशी है, तो potential energy drops to zero as r tends to infinity, and zero potential means free particle. For opposite charges कहानी फ्लिप हो जाएगी, पोटेंशियल नेगेटिव होगा क्योंकि कोई एक चार्ज नेगेटिव साइन कैरी कर रहा होगा. बाय द वे, इन इन्फिनिट वैल्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, इनकी एक अलग कहानी है. नाउ रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी भी शेयर्ड फिनोमेना होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ चार्ज ड्यू टू सम अदर चार्ज होती है. सो कंसिडर कि अगर एक चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल वैल्यू है, तो एट द सेम पॉइंट अगर किसी और चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो, तो हम डायरेक्ट स्केलर एडिशन कर सकते हैं टू गेट अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. That is to say कि we can calculate total potential energy for the collection of charges or charge distribution. So mathematically कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि U equals Q naught, that was the test charge at some point, then over 4 pi epsilon naught. But look at this, this is the relation Q1 over R1 for the first charge, that is जिसके दरमियान हम लोग एनर्जी मालूम कर रहे हैं. But then अगर दूसरा भी चार्ज मौजूद है, तो we can just simply add that potential into the first one. और similarly ये सम चलता चला जाएगा. You can write it in the summation form as well. So, but to get this summation form, you should remember कि जो shared phenomena है, इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस को हम सम कर रहे हैं. तो इमेजिन कि हम लोग कुछ चार्जेस को करीब लेकर आना चाह रहे हैं, और इमेजिन कि यहाँ पे एक चार्ज मौजूद था, और फिर हम दूसरा चार्ज लेकर आए और हमने यहाँ पुट कर दिया, राइट. और फिर हम तीसरा चार्ज लेकर आते हैं और हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इन तीनों के दरमियान कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट. सो इस पूरी बॉडी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी एज अ रिजल्ट जनरेट होगी, वो किस तरह कैलकुलेट करें. तो यू नो कि जो एक पेयर होता है उसके दरमियान एक ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. So we write the sum in some form, in this form, that is U equals 1/4 pi epsilon naught, the sum for Qi Qj divided by R between Ij. So this is the distance between the two charges, and two of the charges can be anything. पिछले फॉर्मूले में हमने एक टेस्ट चार्ज सपोज किया था, but this time कोई चार्ज स्पेशल नहीं है. Every charge gets to count, or Qi times Qj. So these form a pair, that is Ij का एक पेयर बनेगा, मगर हम हर पेयर को सिर्फ एक ही बार काउंट करना चाह रहे हैं. So we raise the sum for I always less than j
दैट इज़ टू से कि अगर एक Q3 है और एक Q4 है, तो हम लोग Q3 टाइम्स Q4 तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, मगर Q4 और Q3 के लिए नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स द सेम पेयर, तो हम डबल काउंटिंग नहीं करना चाह रहे। तो इसी के साथ यू हैव ए होमवर्क फॉर यू. So you're going to have to show by using Gauss law that the total potential energy due to an arbitrary charge distribution is the same for potential energy due to a single charge of same magnitude at the center of the distribution. So left picture diagram, this should help you in some way solving this problem. So imagine कि कुछ charge distribution है, उससे दूर एक test point charge है, right? So you're going to have to use the Gauss law. All right. Again, the due date is not 30th June, but it is rather, what did I told you before? I thought I said, yeah, so it is 3rd July, right? So it's 3rd July 2020. Okay. Okay, so let us do an example for the system of charges. So we have 2-point charges that are located on the x-axis. Q1 is a negative charge that is at x equals 0, and the Q2 is a positive charge at x equals a. So we have to find the work that must be done by an external force. Now this is important, you have to remember that this the work जो हम मालूम कर रहे हैं अभी, that is done by the external force. To bring a third point charge Q3 equals a positive E from infinity to x equals to a. So हम लोग इस डायरेक्शन से काम कर रहे हैं और infinity से इस चार्ज को, इस थर्ड चार्ज को x equals to a की पोजीशन पे लेकर आना चाह रहे हैं. तो इसके अंदर कितना वर्क must be done. So by definition we just go with the formula जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था. So we put the appropriate formula. So this is the test charge इस formula में Q3 is our test charge. Then we plug in the Q1 and the respective distance, that is R13, और R1 से R3 तक जो distance है that is 2a. So we put 2a here. और Q2 जिसके नीचे आएगा R23, that is the distance between second charge and the third charge, it is a. Now charge की values plug in करेंगे हम इसमें और solve करेंगे, and we get a positive work that is e square over 8 pi epsilon naught times a. Now remember कि हम लोगों ने right side पे काम किया है, ठीक है, और this work is positive, जिसका मतलब ये है कि external force must do a positive work to uh, to bring this charge Q3 in and Q1 and Q2 into this configuration. ठीक है. So वर्क इसलिए पॉजिटिव आ भी रहा है क्योंकि इमेजिन के पॉजिटिव चार्जेस करीब हैं. That means the repulsion force is greater than the attractive force between Q1 and Q3. So we must do a positive work to bring this about. Okay, so second part of this problem is to find the total potential energy of the system for 3 charges. Okay, तो इसके लिए जो पिछली स्लाइड में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, उसको हम लोग देखेंगे. एंड दिस इज़ फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इसके अंदर हमारे पास 3 पेयर मौजूद हैं. फर्स्ट इज़ द Q1 and Q3, second is Q1 Q2, and the third is Q2 and Q3. एंड दैट इज़ व्हाट वी मेंट कि हम लोग पेयर्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो पहला समीशन हम लोग रखते हैं, दैट इज़ Q1 Q2 ओवर R1 R2 R1 2, that is the respective distance, plus the second pair plus the third pair. Now again values plug in करो और find what the formula, sorry, what the potential energy becomes. So this is the potential energy minus E square over 8 pi epsilon naught times A, and notice कि this energy is negative. Now पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो potential energy होती है, it likes to be zero everywhere, but this time जो potential energy है वो किसी negative value को attain कर रही है. That means this configuration is much more stable than a free charge.
surprisingly, right? Because these positive charges are closer together, but to bring about this, when we bring this configuration in, this configuration becomes much more stable than the free charge. So to pull them apart, we must do a positive work. Now we define a new quantity, और ये quantity ज़्यादा useful है since it is independent of the test charge. Mass भी similar है, और still ये दो points के दरमियान difference से define होगा, that is the potential difference VA minus the VP, and by definition it is just the work done per unit charge, so it becomes independent of the source charge or the test charge. Okay, तो इसके लिए यूनिट भी दूसरा यूज़ करेंगे, that is 1 volts, it is equal to 1 joule per coulomb, and this is Alexandra volts जिसके रिस्पेक्ट में ये यूनिट यूज़ किया गया है. So in a typical battery, voltage difference होता है electric potential का between two terminals from both sides, inside and outside. So between this point A to this point B, you have a potential difference of VAB, that is 1.5 volts per se. But this is from the outside, right? If अगर हम imagine करें inside क्या हो रहा है, तो this is a टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके अराउंड जो है ये नेगेटिव मटेरियल मौजूद है. तो बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स भी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, that is still 1.5 volts. And so you get two definitions for potential difference between A and B. The first, you can say that the potential of A with respect to B equals the work done by the electric force when unit charge moves from A to B. So this can be defined as the work done by electric force. Okay, second definition comes out to be the potential of A with respect to B equals the work that must be done to move a unit charge slowly from B to A against the electric force. So this becomes the charging situation when the battery charges, and this becomes the situation when the battery discharges. Either way, the potential between A and B remains a constant. There is another unit, electron volts. अक्सर काम आता है small charged bodies के लिए. It is defined as the energy acquired by moving charge of one electron, that is 1.6 exponent minus 19, through potential difference of 1 volt. That is it. So this becomes the energy, or 1 electron volt becomes equal to 1.6 exponent minus 19 joules. Now, since we have already seen the potential energy of distribution of charges, the potential energy, remember, but this is the electrical potential. तो लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के दरमियान भी रिलेशन मालूम है, दैट इज़ पर यूनिट चार्ज. So we can do the same for the potential, and for continuous charge distribution, the summation becomes integral, और हम integral लेंगे over the small charge distribution, that is the dq. अब उस पॉइंट को याद करो जो लेक्चर के आगाज़ में बताया था. उस पॉइंट को यूज़ करते हुए we can say कि potential difference can be written as the integral of electric field in the direction of length element. And for general purpose, since this formula is only dependent upon the type of source charge, ये दो diagrams हम याद रख सकते हैं. That is, for a positive charge electric field is outside, and the V decreases and the potential decreases as you move outward, and the potential increases and as you move inward, and it's the opposite for the negative charge. Okay, तो इस स्लाइड में डेरिवेशन पे गौर ना करो, just focus on what we are doing. So again, we can write the potential difference from point A to point B as a negative integral of E dot dl. The limit goes from B to A, right? We can just flip the limits on the right side, that is to say, हम कह सकते हैं from A to B, and negative sign will just disappear.
on the left side we have a negative sign, we can get a negative sign if we can just write it in the integral form, integral of dv, albatta the limit goes from a to b. ओके तो जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंटेग्रल्स अगर इंटेग्रल रिजल्ट जो है वो बराबर हैं, वी कैन से कि द इंटीग्रैंड जो होंगे, जो अंदर वैल्यूज होंगी, ये भी दोनों बराबर होंगी. So we can just do that, or negative dv just becomes equal to e dot dl. Considering this, इस बात पे ध्यान दो कि जो राइट साइड पे हमारे पास ये e डॉट डी एल है, दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स हैं इन 3 डायमेंशंस और इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है. वी कैन राइट इट इन द कंपोनेंट फॉर्म, दैट इज ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई विद डी वाई प्लस ई जेड in dz, और लेफ्ट हैंड साइड पे इज जस्ट द नेगेटिव द dv, द पोटेंशियल, द स्मॉल पोटेंशियल चेंज जो अपीयर हो रहा है. Okay, so to find any of these elements like ex or ey, imagine कि हम ex मालूम करना चाह रहे हैं, तो just we can say कि dy 0 है और dz 0 है, that is there is no change in the y and the z direction, and doing that we can say कि ex is equal to dv by dx, the negative of the differential of potential in the direction of x. So the electric field can be defined as the differential of potential, the negative of the differential of potential in that respective direction. And similarly, we can do the same for dy, that is divided by dy, sorry, this is y. इस कंडीशन में x खत्म हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ey, this time dz or dx 0 है. So you can do the math, or as a result we get in all the components of E, that is Ex जो होगा, that will be the differential of potential in the x direction, y will be the differential of potential in y direction, and k will be the differential of potential in z direction. Now focus के हम लोग partial differential use कर रहे हैं, because differential, sorry, जो potential है is a 3-dimensional object here, or for each individual differential in particular direction we have to use partial differential. We can write it something like that: the potential is a function of x, y and z. So we can get the partial differentials for these. Negative sign common है, and these are I, j and k. Now अगर potential को बाहर ले जाओ, so you would recall कि ये जो bracket में term लिखी है differential form, this is called the gradient. So we can write the definition of electric field as the negative gradient of the potential. So this is a new definition, and it's amazing how electric field related है potential से, और electric field के अंदर charges move करते हैं. That means they should move in the direction such that it is negative of the change of the potential, and that's what we meant कि potential हमेशा reduce होता है moving in the electric field. Okay, so back to an old example, the spherical charged conductor. याद है इसके लिए हमने electric field मालूम की थी, that is E equals 0 inside the conductor, and outside it drops as r squared. Now what if you're looking for potential inside the same conductor? Maths के बगैर just look at this Q के inside electric field 0 है. That would mean कि अगर एक charge inside this conductor move किया जाए, the work done on that charge by electric field will be 0, because there is no field at any point inside the conductor. And according to our latest equation, the electric field will be 0 अगर potential function constant हो, because the gradient of the constant is 0. And for the outside potential drops as 1 over r. So graphical representation would be when E is 0, electric field is 0, the potential attains a constant value, and this is r 1 over r squared curve, and this is 1 over r curve. Now imagine, now look at the two equations, this and this one. You can see कि एक general form लिख सकते हैं हम लोग, that is v equals
R times the EM. Now ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन केस के अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल स्टोर किया जा सकता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जब हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो इट इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, राइट? तो एयर है इसके अराउंड, बट द प्रॉब्लम इज कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट इज कि अगर हम लोग इनफ पोटेंशियल दें तो इट बिकम्स ए कंडक्टर और चार्ज इसमें से लीक कर सकता है आउटसाइड, एंड दैट बिकम्स द कोरोना डिस्चार्ज, राइट? यस, इट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। सो यू कैन इमेजिन कि अगर हम लोग इसके ऊपर इनफ पोटेंशियल रखें तो इट कैन स्टार्ट स्पार्किंग एंड द एयर बिकम्स ए कंडक्टर इटसेल्फ। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल हम लोग स्टोर कर सकते हैं ऑन ए सर्टेन टाइप ऑफ मेटल बॉडी। दैट इज के अगर हमारे पास रेडियस हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी हम दे रहे हैं, दैट इज वी कैन फाइंड द पोटेंशियल. This small m represents the maximum potential for the maximum electric field. So this equation actually becomes very useful in very practical purposes. Now, one of the implications is in the lightning rod that is used on the skyscrapers to protect it from the lightning from the sky. So, ये जो path नज़र आ रहा है, this is a path taken by the electrons. मगर ये जो light नज़र आ रही है, these are not electrons, these are the glowing gases. तो gases क्योंकि hot हो जाती हैं और फिर उसके बाद वो थोड़ी light emit करती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं. But it should be on the path of the electrons. So this is the path of the electrons. नाउ इमेजिन कि अगर लाइटनिंग रॉड ना हो तो ये स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है. बट ड्यू टू दिस लाइटनिंग रॉड, दिस इज अ मेटल, सिंपल मेटल कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब ये है कि इसकी सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ दिस यू कैन हैव द एक्सेस चार्जेस. नाउ जब एटमॉस्फेयर के अंदर किसी किस्म का पोटेंशियल मौजूद होता है तो उसमें डिफरेंट वेरियस जगहों पे जो है चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो इसी तरह मेटल रॉड भी यहाँ पे मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज एक्यूमुलेट होगा गिवन के पोटेंशियल कितना है इसके एटमॉस्फेयर पे. द इलेक्ट्रॉन जो लाइटनिंग है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी रादर देन एनीथिंग एनीवेयर एल्स, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सेस चार्ज मौजूद है. नाउ न्यूट्रलाइजिंग दैट चार्ज, और जितना एक्सेस चार्ज फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द क्लाउड्स जितना भी बचता है वो तमाम का तमाम वायर के ज़रिए ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि स्ट्रक्चर सेफ रहे. Now this was for the very symmetric objects, लेकिन कुछ objects जो arbitrary shaped होते हैं such as the shape of this pencil, right? So I'm not saying कि wood जो है वो conductor है, मैं सिर्फ इस shape की बात कर रहा हूँ. तो इस shape के अंदर notice कि कुछ points ऐसे हैं जहाँ पे radius ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेडियस कम है. सो दिस टिप जो है वो एक शार्प पॉइंटी ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब इसका रेडियस कम है. सो जस्ट इमेजिन कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, वी हैव वी फिक्स्ड, लेकिन आर रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट शुड गो अप. दैट मीन्स के जो शार्प पॉइंटी एजेस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है. और यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लाइटनिंग रॉड में भी नज़र आ रहा है कि जो शार्प पॉइंटी एज होता है यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस हमने खुद बनाई हैं, जिसमें से एक है पेंटेग्राफ, जो लेफ्ट डायग्राम जो नज़र आ रही है, दिस इज द एपरेटस फॉर पेंटेग्राफ, जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते जाते हैं एक मेटल सरफेस के ऊपर. तो इमेजिन के अगर ये मेटल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है और कोई इंसान जो है उसको टच करता है तो ऑल द एक्सेस चार्ज विल बी ट्रैवलिंग इन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, राइट? और इसमें एक स्ट्रेंज फिनोमेना भी नज़र आता है, दैट इज़ जो बाल होते हैं, सर के बाल वो सारे के सारे उड़ने लगते हैं. एंड दैट्स ओनली बिकॉज हेयर स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो भी कंडक्टर होते हैं और जो चार्ज है वो इसके अंदर ट्रैवल करेगा. जब चार्ज इसके अंदर ट्रैवल करेगा तो जो डिफरेंट हेयर स्ट्रैंड्स होंगे उनके पास सेम चार्जेस होंगे, लेट्स से पॉजिटिव ऑन ऑल दी हेयर स्ट्रैंड्स, जिसका मतलब ये रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से हमें फिनोमेना नज़र आता है कि
बाल जो हैं वो उड़ने लगते हैं. There's a cool demonstration for Van de Graaff on the Jefferson Lab, और इसका YouTube लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है. So go ahead and watch those. There's a point you should remember कि potential जो है वो स्केलर है और orientation does not matter. So look at this diagram A. So इसके अंदर तमाम charges spherical orientation में मौजूद हैं और center से कुछ fixed distance r पर है. Now अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो दैट वुड बिकम 0. तो E 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर आप पोटेंशियल मेजर करेंगे तो यू शुड सी के पोटेंशियल जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. मगर जस्ट इमेजिन कि अगर हम इन चार्जेस को मूव करके एक साइड पे ले जाएं तो so as to make this configuration in the figure B, now you can say कि electric field is not constant बल्कि electric field की कोई particular direction होगी outside in this direction. But still the potential जो है वो scalar है and it should not change its value. तो potential की value change नहीं होगी, अलबत्ता electric field की direction चेंज हो गई. तो पोटेंशियल के लिए ओरिएंटेशन ज़रूरी नहीं होती कि किसका ओरिएंटेशन में मौजूद है. इट शुड जस्ट डिपेंड्स ऑन कितनी दूर जो है वो चार्जेस मौजूद हैं. That's it. Again, similar to electric field, you have the same problems such as the circular charge distribution, the line charge, and the uh, continuous sheet of charge. But this time आपको potential मालूम करना है. So diagrams थोड़ी सी different होंगी, ज़्यादा नहीं, मगर you can just review these examples. Example 23.11 के अंदर जो है circular distribution है, और example 23.12 में line charge distribution है. You do some maths, और ज़्यादा लंबी maths नहीं है, but you come up with these formulas of the potential, and at the end you get these terms जो similar होंगी as that of electric field, क्योंकि सिर्फ एक रेडियस का जो है डिफरेंस होता है. But you have to do the maths, मगर not like rigorously नहीं करनी है. You can just see के एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व हो रही है, एंड दैट्स अबाउट इट. तो इन फार्मूलाज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और इनकी डेरिवेशन भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगेन आई couldn't find a example for the continuous sheet in university physics, but मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के अंदर इसकी एग्जांपल मौजूद है. And you get with this formula sigma over 2 epsilon naught, and there's this term in the bracket for c square plus r square in square root and minus c. Now ये फिगर उससे करस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि इसमें x डायरेक्शन है एंड इसमें z डायरेक्शन है. यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये z डायरेक्शन एंड ऑल द कंपोनेंट्स चेंज अकॉर्डिंगली. So थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं. देयर इज अ प्रॉब्लम 24.05 इन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर आपको मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क. नाउ दिस इज द सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी है, और दिस इज द सेम पोटेंशियल टर्म, राइट. तो इन्होंने दी हुई है आपको इस वक्त पोटेंशियल टर्म, और starting with this expression, drive an expression for the electric field at any point on the axis of the field. So this was the charged disk, or this was the central axis for it. Remember कि इन्होंने जो इस वक्त axis लिया है that is Z, so we can just take it as Z. तो हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन फॉर दिस. नाउ रिकॉल के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मालूम कर ली है, एंड दैट शुड बी द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल. सिंस पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है, वी कैन जस्ट टेक ए नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ z, एंड ओनली इन z डायरेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सेंट्रल एक्सिस पे मालूम करनी है. तो we take the derivative, और after that we get a term that should remind you कि the electric field जो हमने पिछले lectures में मालूम की थी. So it's not that difficult of a problem, but you should do that. So as a last point, there's this concept of equipotential field lines or equipotential surfaces. Now this is a concept similar to gravitational potential, जिसके लिए हम लोग altitudes को map करते हैं. If you've seen a contour plot
तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग वो पाथ इंडिकेट करने वाले हैं इन फीड लाइंस में जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम है। दैट इज़ इमेजिन कि दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज और इसके अराउंड हमने वो तमाम पॉइंट्स ट्रेस कर लिए जिसके ऊपर पोटेंशियल है ऑफ -30 volts। दैट मीन्स कि अगर मैं इस पाथ पे मूव करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डूइंग नो वर्क because the potential is constant, and if the potential is constant on this path, that means the electric field is typically zero. So I can just move the object without caring इस path के अंदर, right? तो this is a main point. इस path पे जब तक मैं move कर रहा हूँ charge को तब तक it should be moving as a free charge. There is no electric field on it. Similarly, there should be another value of potential, that is, in this example it is V equals to -50 volts, और उसके लिए एक different path trace होगा. Now how should we do that? We do that by equations, or we do that by experiments, but इस लेक्चर में आपका काम ये नहीं है कि कैसे फाइंड करना है, you just have to understand कि ये होती क्या है. So as we move closer to the नेगेटिव चार्ज, जैसे जैसे हम इससे करीब जाते जाएंगे वी सी के जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जा रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो एट दिस सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज वी हैव टू से कि जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट हो गया है, बट मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिट पोटेंशियल्स की एक अलग कहानी है. So again we just move out और we get to a point जहाँ पे positive और negative charges के दरमियान अगर इनका equal magnitude है, we get to a center जहाँ पे potential जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. And similarly we move to the positive charge जिसमें outside circle है उसके ऊपर potential है +30 volts, and जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे closer to the positive charge, it increases for 50, 70 and increase होता जाएगा until it reaches a certain value. So these are the potential lines, these are the equipotential lines. That means इसके ऊपर तमाम points के ऊपर equal potential रहेगा. So for any configuration of charges, this map of equipotential line changes. So we have a two equal positive charges, उनके लिए map थोड़ा different होगा. Now ये टू डायमेंशनल डायग्राम थे जिसके ऊपर इक्विपोटेंशियल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं. अगर हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर कंसिडर करें हम लोग तो उसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होनी चाहिए एंड नॉट दीज लाइंस. तो ये लाइंस नहीं होंगी बल्कि सरफेसेस होंगी, और सरफेसेस का मतलब ये है कि यू कैन मूव अक्रॉस दो सरफेसेस, और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इज ऑन द सेम सरफेस, दैट मीन्स यू हैव डन नो वर्क. मगर अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर है, that means there should be work done on the particle for moving that charge. So that's it for this lecture. This was potential, electric potential. और आई होप कि जो इस सवाल शुरू में किया गया था उसका आप जवाब दे पाएंगे कि why is it that charges can move across a cell membrane. So see you in the next lecture. Allah Hafiz.